नमस्कार। आज हम भारत सरकार की एक ऐसी स्कीम को समझने जा रहे हैं जो एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज दोनों के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। ये एक लिमिटेड टाइम मौका है जिसका नाम है कर्मचारी नामांकन योजना 2025। चलिए गहराई से जानते हैं कि ये स्कीम आखिर इतनी जरूरी क्यों है। जरा सोचिए, 8 साल की कंप्लायंस की गलतियां जिन पर लाखों का जुर्माना लग सकता था, वो सब सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए में सुधर जाए। सुनने में शायद यकीन न हो, है ना? पर यही इस स्कीम का आप कह सकते हैं सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो सवाल ये उठता है कि सरकार को ऐसी कोई स्कीम लाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? देखिए, इसका जवाब उस बड़ी मुश्किल में छिपा है जिससे कंपनियां सालों से जूझ रही थीं। सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि अगर कोई कंपनी अपनी पुरानी गलती सुधारना भी चाहे, मतलब जो कर्मचारी छूट गए हैं उन्हें एनरोल करना चाहे, तो उस पर भारी भरकम जुर्माने और बकाया का बोझ आ जाता था। अब इसी डर से कई कंपनियां चुप बैठी रहीं और इसका सीधा नुकसान उन कर्मचारियों को हुआ जिन्हें सोशल सिक्योरिटी का कोई फायदा नहीं मिला। तो इसी डेडलॉक को तोड़ने के लिए सरकार एक तरह का मास्टर स्ट्रोक लेकर आई है, कर्मचारी नामांकन योजना 2025। इसे सिर्फ एक और सरकारी स्कीम की तरह मत देखिए। ये असल में एक कंप्लायंस रीसेट बटन है जो कंपनियों को एक बिल्कुल नई और साफ सुथरी शुरुआत करने का मौका दे रहा है। तो आखिर ये योजना है क्या? बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहें तो ये एक लिमिटेड टाइम के लिए माफी योजना है। ये एम्प्लॉयर्स को एक गोल्डन चांस देती है कि वे खुद आगे आएं और उन कर्मचारियों का नाम दर्ज कराएं जिन्हें वे पहले नहीं करा पाए थे। ये कानूनी और फाइनेंशियल रिस्क से बचने का एक सेफ रास्ता है। अच्छा, अब इन तारीखों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है क्योंकि सारा खेल इन्हीं का है। देखिए, ये स्कीम सिर्फ उन कर्मचारियों पर लागू होती है जो 1 जुलाई 2017 से लेकर 31 अक्टूबर 2025 के बीच कंपनी में आई हैं। और इससे भी जरूरी बात यह है कि कंपनियों के पास एक्शन लेने के लिए बहुत कम समय है। सिर्फ 6 महीने की एक छोटी सी विंडो है, 1 नवंबर 2025 से 30 अप्रैल 2026 तक। मतलब वक्त बहुत कीमती है। ठीक है, तो टाइमलाइन तो अब साफ है, पर अगला बड़ा सवाल ये है कि भाई इस मौके का फायदा उठा कौन कौन सकता है। चलिए इसकी एलिजिबिलिटी को भी समझ लेते हैं। देखिए, एलिजिबिलिटी के नियम काफी सीधे हैं। कर्मचारियों के लिए 3 शर्तें हैं। पहली, वो 2017 से 2025 वाली टाइम पीरियड के बीच ज्वाइन हुए हों। दूसरी, वो पहले कभी ईपीएफ के मेंबर न रहे हों। और तीसरी, डिक्लेरेशन वाले दिन वो जिंदा हों और कंपनी में काम कर रहे हों। और एम्प्लॉयर्स के लिए तो एक बहुत बड़ी राहत की बात है। लगभग हर कंपनी इसके लिए एलिजिबल है, यहां तक कि वो भी जिन पर ईपीएफओ की कोई जांच पहले से चल रही है। लेकिन ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि इस स्कीम के दायरे में क्या नहीं आता। तो पहली बात, ये स्कीम 1 जुलाई 2017 से पहले के किसी भी मामले पर लागू नहीं होगी। और दूसरी बात, अगर किसी केस में बकाया पैसों का हिसाब किताब पहले ही फाइनल हो चुका है तो उस बंद चैप्टर को दोबारा नहीं खोला जाएगा। चलिए अब आते हैं इस स्कीम के उस हिस्से पर जिसका शायद सबको इंतजार था। इसके जबरदस्त फाइनेंशियल फायदे जो लाखों की देनदारी को एक मामूली सी फॉर्मेलिटी में बदल देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा आपने, सिर्फ 100 रुपए। ये कोई टाइपिंग की गलती नहीं है। इस स्कीम के तहत पिछले 8 सालों की सभी चूकों का कुल जुर्माना सिर्फ 100 रुपए है। और ये एक मुश्त रकम ईपीएफ, पेंशन और इंश्योरेंस तीनों स्कीम्स को कवर करती है। जरा इस स्लाइड पर एक नजर डालिए। ये फर्क जमीन आसमान का है। नॉर्मल हालात में जुर्माना लाखों में जा सकता था, जो किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता था। लेकिन EES 2025 इसे घटाकर सिर्फ 100 रुपए का एक सांकेतिक चार्ज बना देती है। यही वो बात है जो इस स्कीम को इतना खास बनाती है। लेकिन कहानी सिर्फ 100 रुपए पर ही खत्म नहीं होती। इसके अलावा भी बड़े फायदे हैं। पहला, अगर एम्प्लॉयर ने कर्मचारी की सैलरी से उसका हिस्सा पहले नहीं काटा है तो अब उसे वो बकाया चुकाने की जरूरत नहीं, वो पूरी तरह माफ है। दूसरा, अगर कोई कंपनी अपने सभी मौजूदा कर्मचारियों की सही जानकारी दे देती है तो ईपीएफओ उन पुराने कर्मचारियों के बारे में कोई सवाल नहीं करेगा जो नौकरी छोड़कर जा चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है। तो अब तक हमने ये जान लिया कि ये स्कीम क्या है और क्यों जरूरी है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, कैसे कोई भी एम्प्लॉयर इस प्रोसेस को पूरा कैसे कर सकता है। और अच्छी बात यह है कि पूरा का पूरा प्रोसेस डिजिटल और काफी सीधा साधा रखा गया है। चलिए फटाफट इन 6 स्टेप्स को देख लेते हैं। सबसे पहले आपको जुलाई 2017 से अपने सारे एम्प्लॉय और पेरोल रिकॉर्ड्स का एक इंटरनल ऑडिट करना होगा। स्टेप 2, उमंग ऐप से हर कर्मचारी का फेस ऑथेंटिकेशन वाला यूएएन बनाना है। फिर तीसरा स्टेप है अपना हिस्सा, ब्याज और जो भी चार्जेस हैं वो ईसीआर के जरिए जमा कर देना। इसके बाद चौथा, ईपीएफओ के पोर्टल पर ऑनलाइन डिक्लेरेशन सबमिट करना है। 5वां स्टेप है पेमेंट को TRRN नंबर के साथ अपने डिक्लेरेशन से लिंक करना। और आखिर में बस वो 100 रुपए का जो हर्जाना है उसे पे करके प्रोसेस पूरा करना है। देखा है ना, सिंपल। अब हम इस पूरी चर्चा के आखिरी पड़ाव पर हैं और यहाँ एक बात पर जोर देना बहुत बहुत जरूरी है और वो है समय की कमी। ये बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, ये मौका हमेशा के लिए नहीं खुला है। 30 अप्रैल 2026 की जो तारीख है वो पत्थर की लकीर है, उसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। ये 6 महीने की खिड़की पलक झपकते ही बंद हो जाएगी। इसलिए सोचने और एक्शन लेने का सही समय अभी है।
जाते जाते दो और जरूरी बातें। पहली, पूरी ईमानदारी बरतना बहुत जरूरी है। अगर डिक्लेरेशन में कोई भी हेरफेर किया तो ये स्कीम वहीं रद्द हो जाएगी और आप वापस वहीं पहुंच जाएंगे जहां से शुरू किया था। और दूसरी, एक बोनस फायदा भी है। इस स्कीम में हिस्सा लेने से आप भविष्य में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना जैसे दूसरे सरकारी लाभों के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। आखिर में ये समझना जरूरी है कि ये योजना सिर्फ कागजी कार्रवाई और जुर्माने से बचने का जरिया नहीं है। जैसा कि ये कोटेशन कहता है, ये सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा के बड़े राष्ट्रीय लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक बहुत बड़ी छलांग है। और हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। ये योजना सजा देने की बजाय साथ मिलकर काम करने की सोच को बढ़ावा देती है। तो क्या ये भारत में लेबर लॉ कंप्लायंस के एक नए दौर की शुरुआत हो सकती है? इसका जवाब तो खैर भविष्य ही देगा, लेकिन ये शुरुआत निश्चित रूप से काफी उम्मीद जगाती है। All right, today we are diving into something that is, frankly, a massive deal for Indian businesses. It's the new Employees Enrollment Scheme for 2025. And believe me, this is a time-sensitive opportunity you're going to want to understand. So, let's get right to it. You know, if you're an employer in India, this question, it's probably one of those things that keeps you up at night, right? Gaps in your Employee Provident Fund enrollment history are super common. But they're also a huge, stressful, and potentially very, very expensive problem to have. It's a serious risk hanging over so many companies. And let's be clear, the stakes here are incredibly high. The normal penalties for failing to enroll your employees, they can be absolutely crippling for a business. But something has changed. The government has just rolled out a temporary fix, a way to clean up those past mistakes without getting hit by those massive financial consequences. So let's think about this the right way. This isn't just another complicated regulation to deal with. No, this is something you almost never see from the government. It's a second chance. It's a strategic window to completely wipe the slate clean. So, what exactly is the Employees Enrollment Scheme 2025? Well, at its heart, it's a compliance amnesty program. Think of it like a government-backed reset button. It lets employers come forward, voluntarily enroll employees they missed in the past, and get their records straight, all with unbelievably small penalties. Okay, now we're getting to the best part. Let's dig into the single most powerful feature of this scheme, the part that honestly sounds a little too good to be true. This is what makes this whole thing so absolutely extraordinary. Just look at that number. 100 rupees. That's it. For all of your past mistakes, for the entire period from July 2017 all the way to October 2025, the grand total for penalties is just 100 rupees. That is not per employee, that's a single flat fee for your entire company, and it covers all three EPFO schemes, the Provident Fund, the pension scheme, and the insurance scheme. This is just a massive, massive financial relief. And wait, it gets even better. For all those employees you're now enrolling, the amount they have to pay for their share of past contributions is zero. Nothing. It is completely waived. Now, the key condition here is that this only applies if you, the employer, didn't already deduct that money from their salary. This just removes such a huge hurdle for everyone. So, you can see this isn't just about giving businesses a break. The scheme has been really cleverly designed to be a true win-win. It creates some pretty significant advantages for both the employers and the employees, who are finally getting the Social Security they were entitled to. Just look at how this breaks down. For employers, you slash penalties down to just 100 rupees, you fix all those past errors, and you even get legal protection from former employees trying to take action, although there are some conditions. Plus, and this is big, it opens the door to future government incentives. And for employees, this is a huge win. They get full access to their Social Security, the fund, the pension, the insurance for that past period without paying a single rupee out of their own pocket. The employer still pays their share, so the employee's account is made whole. It's fantastic. Okay, the benefits are super clear, right? But how does this actually work? What do you have to do? Let's walk through the process. The government has laid out a really clear, completely digital path to get this done. It all kicks off with an internal audit.
You've got to find every single eligible employee you missed. Then, for each one, you generate their universal account number using the Umang app. Step 3 is super important. You have to pay the employer's share plus any interest and admin charges. After that, you go online to the EPFO portal and submit the official declaration, making sure to link it to your payment. And the very last step, you pay that tiny 100 rupee fee for damages, and the process is complete. It's a checklist, but you have to follow every single step perfectly. Now, as you can imagine, while this scheme is incredibly generous, it's not a free-for-all. There are some very strict rules you need to follow to make sure your declaration is actually valid. Understanding the fine print here is absolutely critical. Okay, please pay very close attention to these dates. They are everything. This scheme only covers employees who joined your company between July 1st, 2017 and October 31st, 2025. The scheme itself is only open for 6 months. It kicks off on November 1st, 2025 and ends on April 30th, 2026. That is a hard final deadline. These dates are totally non-negotiable. So, who can actually take advantage of this? Well, the criteria are surprisingly broad. Pretty much any employer can participate, even if you weren't previously registered with the EPFO at all. And get this, even if your business is currently facing a compliance inquiry, you can still use this scheme to settle things. For the employees, the rules are straightforward. They had to have joined within that specific date range, and they must be alive and still on your payroll when you make the declaration. It is just as important to know what's not covered. The scheme does not go back in time before July 1st, 2017. If you've already had a case where the authorities made a final decision on what you owe, you can't use this scheme to change that. And finally, and this is a big one, you only get one shot. Each company can submit only a single declaration, so you have to make sure it's perfect, complete and accurate the first time you hit submit. And this brings us to a very, very stern warning, and I'm quoting this directly from the official government notification. If you make a declaration by lying or hiding the facts, it will be considered void ab initio, which is a legal term meaning it's invalid from the very beginning. It'll be as if you never even made the declaration. All the benefits, the waived fees, the 100 rupee penalty, they all disappear, and you'll be facing the full force of the law. Honesty is absolutely non-negotiable here. So the crucial takeaway here is that what we're looking at is a rare and very limited time opportunity. It's a powerful chance to fix the past, but it's also a really strategic move you can make for your company's future. And here's that forward-looking benefit I mentioned. Taking part in the scheme doesn't just clean up your old records, it actually makes your company eligible for another major government program, the PMVBRY, which is all about providing incentives for creating new jobs. So by solving a past problem, you're literally unlocking a future opportunity. Ultimately, what the government has done is put a big, beautiful compliance reset button right on the table. It offers a simple, incredibly affordable way to solve what is often a massive and complex problem. But that button is only going to be there until April 30th, 2026. So the only real question left is, will you press it in time?